हाय गाइस, आई एम रेयांश एंड वेलकम बैक टू माय फिटनेस चैनल। इस वीडियो में मैं बिगिनर्स के लिए जिम वर्कआउट बताऊँ। अगर जिम में आपका फर्स्ट है तो आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज लगाना चाहिए और किस तरीके से लगाना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा। अगर जिम में कोई ट्रेनर है तो आप उसकी गाइडेंस ले सकते हैं। अगर जिम में नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको बताऊँगा तो आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। आपको सभी एक्सरसाइज के 12 से 15 रेपिटेशन के 2 सेट्स लगाना है। फर्स्ट हम बॉडी स्ट्रेचिंग, बॉडी वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वार्म अप वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो वार्म अप होने के बाद हम फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, लेट पुल डाउन मशीन से। इसको लगाते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, बैक को ऐसे रखना है, बैक को स्ट्रेट रखना है, चेस्ट को अप रखना है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. ये एक्सरसाइज आपके बैक मसल्स के लिए होती है और विंग्स के लिए होती है। जो विंग्स की होती है उसके लिए होती है, और इसका यहाँ पर लोड आता है इस। और सेकंड एक्सरसाइज लगाएंगे हम चेस्ट वाइज। बीच बीच में आपको पानी थोड़ा बहुत पीते रहना चाहिए। आपको ज़्यादा पेट भर के नहीं पीना, आपको नॉर्मली पानी पीते रहना चाहिए। इस एक्सरसाइज में आपके चेस्ट पे लोड आता है, क्या आपको जैसे पुश करते हैं आप उसको हाथ कैसे रखना है, एक नहीं करना, आपको हाथ का स्ट्रेट रखना और पुश करना है उसको। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाते हैं। Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El professor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied. लगाएं चेस्ट के लिए, आपके जो सेंटर होता है इसके लिए। इसमें आपकी बॉडी की पोजीशन को आपको चेस्ट को अप रखना है और उसको यूँ लाना है। आपको ऐसे नहीं लाना है। मोस्ट ऑफ लोग देखे मैंने उसको ऐसे लाते हैं, ये नहीं लाता। आपकी बॉडी को उसको स्ट्रेट रखना है, आपको बैक को चिपका के रखना है, उसको ऐसे होता है। What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, slipping, speaking in tongues. Sly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Sly ink, GVA, that's how we get it done. लगाएंगे शोल्डर प्रेस। आपके हाथ को सिर्फ ऐसे रखना है, जैसे पुश कर दो, इसको बैंड नहीं करना आपको। मैं आपको बताऊँ कैसे लगाते हैं इसको।
Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. और लास्ट एक्सरसाइज हम लगाएंगे फ्री स्क्वाट। इसके आपको 12 से 15 रेपिटेशन के 2 सेट्स लगाना है, ठीक है। तो आपको पता कैसा लगाते हैं। आपके लेग की पोजीशन को ऐसा रखना है, थोड़ा सा शोल्डर के सीध में, फिर उसके बाद आपके बैक पे स्ट्रेट इन सभी एक्सरसाइज को आपको कम से कम 10 से 15 दिन लगाना है। स्टार्टिंग में कुछ दिनों में आपकी बॉडी थोड़ी सी पेन करेगी, बट कोई इशू नहीं है। अगर आपकी बॉडी पेन करती तो आप नाइट में हल्दी वाला मिल्क यूज़ कर सकते हैं, इससे आपकी बॉडी के पेन को रिलीफ मिलेगा। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how some